व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं थग लाइफ एस जयशंकर सर की। और भाई साहब कम बोलते हैं सर, लेकिन जो बोलते हैं बहुत ही लाजवाब और मतलब डंके की चोट में बोलते हैं। और सीधा वो कहते हैं ना कि आंखों में आंख डाल के कहते हैं सामने वाला भी 10 बार सोचता है क्वेश्चन करने से पहले। तो करते हैं वीडियो साथ में एंजॉय। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो को कर दे लाइक 1 2 3 लेट्स गो। There was an era that when I was your age in a university, the world actually used to see India and Pakistan on equal terms. Cool. Today, nobody does, not even the Pakistanis. So you know, a neighbor who will not trade with you, who's a member of the WTO and before that of the GATT, but who will not extend MFN status even though they are legally obliged to, and we did. You have a neighbor who would not allow you connectivity. So we have, for example, the potential to use Pakistan to transit on to Afghanistan or Iran, but they will not allow you that connectivity. Who in many ways have slowed down regionalism, largely because of a concern that that might integrate them more with our economy. Who filter people-to-people interaction. So it's a very challenging neighbor. Okay. Challenging. Now, all of that you could still handle if they then don't do the one thing which is actually unacceptable in the world today, which is to conduct terrorism as, in their eyes, a legitimate tool of statecraft, as a way of pressurizing you to come to the negotiating table. Now, it's not that it's never been done before in history, but it's not today acceptable as a sort of norm of international relations anymore. There's no part in the world, I mean, you have terrorism in different parts of the world, but there's no part of the world where a country uses it consciously, deliberately as a large-scale industry against its neighbor. बिल्कुल सही So, बात। for me, the issue is not do you talk to them, don't you talk to them. Of course, I mean, everybody wants to talk to the neighbor. The issue is how do I talk to a country that is conducting terrorism and which, frankly, I would say follows a policy of implausible deniability. A complete failure of a rogue nation who happens to be a nuclear power and unfortunate neighbor of us will be an asset to us or failure or a liability to us, sorry. It is a reality to us, not a, ये बहुत बड़ा रियलिटी है। you know, say in life you have what you have. You know, I cannot, I think Devendra ji said, like Pandavas could not choose the relatives, we also cannot choose our neighbor. We would naturally hope that good sense prevails, that, you know, the practices of the past are not followed. That is our hope. And in diplomacy, it is important to be hopeful. But I would admit to you, it is a hope. No, the fact that we have clearly today come out in that region as the primary power. Obviously, we have neighbors, we have to, and I will speak about that, we have to have very strong and positive relationships with them. But it isn't just in power terms, it is in economic terms, it is in trade terms, it is in mobility terms, how people move amongst each other. And there's no question today India is the sort of focus, the fulcrum of this region. If you look at India, Bangladesh, India, Nepal, India, Bhutan, India, Maldives, India, Sri Lanka, India, Myanmar, even India, Mauritius, India, Seychelles, each one of these relationships has grown in the last 5 years. The trade has grown, investments have grown, cooperation has grown. So we want regionalism, we see benefits in it, we think everybody would gain. But the problem we faced when it came to SAARC was, how do you deal with somebody in the room who actually is sitting with you on the table by the day and actually sending people over with guns at night? And that is a problem. No other country in the world practices terrorism in the manner in which Pakistan has done. You show me anywhere in the world, you know what Pakistan has done for so many years against India. So again, one of the changes that Narendra Modi has made, you know, somewhere, look at Mumbai, you know, after 26/11.
feeling was, the Pakistanis are like this. No, you cannot accept it. You cannot, if you deal with it as though that is how they are and therefore this is not. So I think it is very important for us to be clear ourselves that this kind of policy, this kind of behavior, this kind of action is unacceptable. जो माने एक किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। अब उनके यहाँ और सालों से ये चल रहा है कि हम इसका सामना कैसे करें, और इसमें जो है हम दुनिया को हम समझा पाए कि आतंकवाद जो है, कभी आप ये नहीं समझिए कि आतंकवाद राजनीति है या कूटनीति है। आतंकवाद है, आज हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल आपके खिलाफ ये होगा। और दुनिया अब समझ चुकी है, आपने देखा होगा कि आजकल आतंकवाद पर दुनिया जो है, जो पहले जो मानती थी कि हाँ कहीं और हो रहा है तो हमें क्या परवाह है, अभी इसमें हम दुनिया को एक किस्म से साथ लाने में हमें, मैं नहीं कहूँगा कि पूरी सफलता मिली है, पर पहले से जो है दुनिया की समझ पहले से ज्यादा है। दुनिया आजकल कम बर्दाश्त करती है इसको, और इसके कारण जो है जो भी देश आतंकवाद का उपयोग करता है उन पे आज वो दबाव है, वो हिचकिचाते हैं, और कभी कभी जब कुछ करते हैं उसका जवाब तो आप जानते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। बिल्कुल सही बात। सर की सबसे पहले तो जो पर्सनैलिटी है, एक जो कूल काम एंड कंपोज तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, और जो बात करते हैं ऐसे करते हैं जैसे कि बहुत ही आराम, मतलब पोलाइटली भी, और मतलब लेकिन जो सामने वाले को शब्दों का जो इनका जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होता है ना, बहुत ही गजब होता है। और बोले जैसे हम आईटी में एक्सपर्ट है, वो इंटरनेशनल टेररिज्म में एक्सपर्ट है। और वो सर ने हाल ही में वो भी तो कहा था कि अगर आप सांप पालोगे अपने बैकयार्ड में तो ऐसा नहीं है वो सिर्फ पड़ोसियों काटेंगे, वो एक दिन आपको भी काटेंगे। और वो टीटीपी के उसमें क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट में कहा था, उनके कॉन्टेक्स्ट में टीटीपी के। और अगर बात करी जाए तो मुझे लगता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बहुत गजब है, बहुत ही सही तरीके से, और रिलेशंस बिल्ड करने में एक डिप्लोमेट का बहुत बड़ा रोल होता है। और आज उन्होंने बताया ना कि इंडिया की रिलेशन मॉरिशस से लेकर किसी भी कंट्री से आप देख लो आसपास नेबर सबके साथ बढ़िया है, एक्सेप्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को जो चीज हम कहते हैं उसके ऊपर कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि होप तो है, फिर भी कभी तो कुछ करेंगे, कभी तो पाकिस्तान इज अ रियलिटी, नॉट एन एसेट, नॉट अ लायबिलिटी, इट इज अ रियलिटी। कि आप किस तरीके से फंक्शन करते करते किस डायरेक्शन में चले जाओगे, ये पाकिस्तान ने सेट करके दिखाया एग्जांपल, और आपको उस तरीके से बिल्कुल नहीं चलना है। बाकी आई एम श्योर सर की बातें आपको पसंद आती हैं। मेरे को टू बी फ्रैंक इनके जितने भी वो होते हैं स्पीच होते हैं, सुनने में बड़ा मजा आता है। मिलते हैं आपसे इसी बात पे एक और वीडियो के साथ। लाइक करना मत भूलें। बाय बाय।